Very good morning to all. And guys, today in this session we'll discuss about expert systems. So as we have already discussed about the classification of information system, and in classification we know that number one is the operational support systems in which we support our operations, our transactions in the organization. Okay, like transaction processing system, office automation system, process control system. Examples, okay, transaction processing system (TPS) is, it is used to record information from the daily operations. Okay, so whenever transactions are, they are we can say they are continuous or scheduled transactions. So from that information will come out, and we need to capture that information, and we have to store that information somewhere. So that is TPS, transaction processing system. Second one is office automation system. So we need to automate our office, okay? Because actually what happens, our managers, they all are busy with the, it was the traditional approach. Our managers, they are busy with the file making, paperwork and all, and they are drawing salary in lakhs. So they are not recruited for this paperwork. Okay, they have to put their their education, their knowledge, their experience, their research in their decision making, so that it will be beneficial for the organization. So to remove all that paperwork and to automate our organization, okay, so that the communication becomes easier, and everything is is in place and automatically. So that is office automation system. So third example uh, is here. We can say that process control system. Okay, if you remember that, if you have visited any factory and also if you see that, let us suppose Coca-Cola factory. So there is one belt which is moving, and over that empty bottles are there. So empty bottles are moving. One machine will come from the top, and it will fill Coca-Cola in it. Okay, then it will move forward, and at the bottom there are some sensors. They will find out whether the, 300 ml or 500 ml is filled or not. Okay, if it is okay, then the bottle will move forward. Otherwise, it will go to different segment. And after that, another machine will come. It will put cap on it. Again, a bottle will move forward. Another machine will come. It will put label on it. Then it will drop in the box, and packaging will be done automatically. So we are controlling that overall process. That is why it is known as process control system. Okay, so each and everything is done by camera and sensors. So supervisors are there, okay, in the factory, but they are just to see that whether the things are going in a right manner or not. Okay, so we are not assisting our managers or our employees in their decision making and all. We are just we are supporting in operations and transactions. That is why the number one classification was operation support systems, in which we are supporting our operations. Okay, so let me write as well. So number one was the classification. Okay, right, let me see. The information system classification we have already discussed. Okay, but let me write so that it will be easier to connect. Okay, so number one classification is your operation support system. Okay, and the examples of operation support systems are, what are the examples? Examples are
transaction processing system, and we have office automation system, we have process control system, etc. Okay, so here we are supporting our operations or transactions in an organization. Number two classification was, it is our management support system. Okay, and in this classification, in this management support system, what the examples are: decision support system. We have already discussed decision support system and its components, and in which concept decision support system DSS works. And in the previous session, we discussed that what if analysis. Okay, and expert support system. These are the examples of management support system where we are directly assisting our managers in their decision making. Okay, so if you have any doubt, go through the previous videos, okay, which are already uh, uploaded. So now the third one is general support system. So the example of general support system is your, it is your expert system. Now, now guys, this general support system, we have discussed these two classification of information system. Now we are discussing general support system. Okay, so the example of general support system is expert system. And what is general support system? It is the combination of these two, where with the help of general support system, we are supporting our operations or our transactions, as well as we are supporting our decision makers in their decision making. Okay, so general support system, it is a combination of these two, above two. Okay, okay, so expert system, it it comes under the category of artificial intelligence. Might be you have heard about this artificial intelligence. Okay, now let me tell you what is artificial intelligence. We all know what is intelligence. Okay, intelligence is something when we learn from our past experience. That is our intelligence. Okay, so let us suppose, for example, 2 years back, I was driving a bike at a good speed. Okay, and suddenly, abruptly, I saw that speed breaker is there. So I was not able to, to decide what to do. So at that time, I applied front brake. Okay, and I got down, I fall down because I applied front brake. Okay, so I did this, but after 2 years, again I'm in the same situation. Now, from my past experience, I have learned that in these scenarios, whenever I'm driving at a fast speed, at a high speed, at that time, front brake I don't have to apply. Okay, because there is inertia. My my bike from backside, it will just cover. It will flip. So, what I'll do, I will apply back brake first. Okay, okay, and then little bit front brake. Because what I did actually, I learned from my past experience. That is why this time I didn't fall down. So I saved myself. So this is intelligence when we learn from our past experience. So when the same thing happens artificially, okay, without human, machines are doing the same. That is known as artificial intelligence. Okay, if you have seen the movie of Rajnikant, Robot. Okay, आप सबने देखी होगी रोबोट मूवी रजनीकांत की, और नहीं देखी तो एक बार देखिएगा जरूर.
So in that movie, you will see that robots are, artificially they are intelligent, and they know what they have to do. Even if their battery goes down, they took one wire from socket and they put in themselves. They get charged. They know each and everything. This is artificial intelligence. So the expert system, it is an example of artificial intelligence. Even if I give you one more example of artificial intelligence, uh, a few kb of game, that is chess. आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में चेस आपने खेलते होंगे, तो आप देखेंगे कि आप अगर कोई भी एक मूव कर रहे हैं, आप कोई भी एक चाल चल रहे हैं, तो आपके दिमाग में जो भी है, जो भी चालें आपने आगे की सोच रखी है कि आप 3-4 चाल बाद क्या करने वाले हैं, what will be your move after 4 steps. So that small kb of software is able to read your mind. वो आपके माइंड को रीड कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली वो भी फिर अपना मूव करेगा. ओके, तो एक छोटा सा केबी का गेम, इट इज रीडिंग अवर माइंड, इट इज प्लेइंग विद अस. ओके, so that is an example of that. It is a very small example. Okay, nowadays in medical science, in even in education, okay, in space science, in defense, each and everywhere, artificial intelligence is working. So you got the concept, what is artificial intelligence. So now expert system. Now what is expert system? It is an example of general support system. Okay, and it is, we can say, it is a combination of artificial intelligence and computer science. Now what happens actually? The scenario is, uh, let us suppose you have an organization, and you have organization, you have setups or your offices at different geographical locations. आपकी कंपनी है और ऑफिस उसके अलग अलग लोकेशन में है. एक लोकेशन आपका दिल्ली में है, एक ऑफिस, वन ऑफिस इज एट मुंबई, वन इज एट पुणे, वन इज एट चेन्नई, वन इज एट कोलकाता and Lucknow. So you have different at different geographical locations in India. You have your offices. Now you have only one expert with you. आपकी कंपनी में एक ही एक्सपर्ट है. So whenever your decision maker, they will be requiring some help to for decision making. They will consult that expert. उस कंसल्ट से पूछ एक्सपर्ट से पूछेंगे, कंसल्ट करेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, हम क्या करें. बट एक्सपर्ट के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशंस क्या है? एक्सपर्ट इज अ ह्यूमन बीइंग. ओके, सो उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो रिसर्च है, वो लिमिटेड है. एक ह्यूमन की रिसर्च लिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड ही होगी, है ना. तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो रिसर्च है, उनका जो नॉलेज है, वो सब कुछ बाउंडेड है. बट दो ऑल्दो ही इज एन एक्सपर्ट. ओके, so being as a human, he cannot work 24/7. उनको रेस्ट भी चाहिए. He will work for hardly 5 to 7 or 8 years, 8 hours, sorry, 8 hours, in an organization per day. So one more challenge is that expert can be available at one location at a time. एक्सपर्ट अगर दिल्ली में है तो चेन्नई, मुंबई, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, यहाँ पे जो आपके मैनेजर्स हैं, वो उनको कैसे कंसल्ट करें, बिकॉज एक्सपर्ट तो एक ही जगह पे है. तो ये सारे चैलेंजेस हैं एक एक्सपर्ट के साथ. अगर हमारी कंपनी में एक ही एक्सपर्ट है, तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. ओके, तो और हम हर लोकेशन के लिए एक एक एक्सपर्ट भी नहीं रख सकते. So we came up with the solution, that is expert system. Now, what happened that let us suppose I have 500 experts of specific domain. Let us suppose finance. फाइनेंस के 500 एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास. हमने उनको एक हॉल में बिठा दिया है, लेक्चर थिएटर में बिठा दिया है. अगर अब मैं एक क्वेरी उनको दूंगा, कोई भी अपना एक क्वेश्चन उनसे पूछूंगा, तो जब 500 एक्सपर्ट अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस और अपनी रिसर्च, ये सब अप्लाई करके उसका मुझे आंसर देंगे, दैट विल बी एक्यूरेट एंड रैशनल आंसर, है ना. तो उसमें एरर के चांसेस, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी चांसेस ऑफ एरर, क्योंकि 500 एक्सपर्ट्स ने अपनी नॉलेज और ये सारी चीजें, अपना एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च उसमें झोंक दी है, उसमें अप्लाई करी है, तब उसके बाद मुझे बिल्कुल कंसाइज्ड आंसर मिला है. गेटिंग द पॉइंट. So now, what if I take their knowledge of multiple experts?
उनकी नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब कुछ अगर मैं एक जगह ले लूं और उसको कहीं पे मैं स्टोर कर दूं, आई स्टोर इट समवेयर, और उसका मैं नाम दे दूं नॉलेज बेस, क्योंकि अब वो डेटाबेस नहीं है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था, वी हैव थ्री कंपोनेंट्स, यूजर इंटरफेस, ओके, मॉडल बेस एंड डेटाबेस। तो वहां पे हमने डेटा रखा था, और फंक्शनल एरिया यानी कि डिपार्टमेंट्स का डेटा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा रखा है तो वो फाइनेंशियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। अगर वो मार्केटिंग का डेटा है देन इट इज मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके, बट यहाँ पे हम डेटा नहीं रख रहे हैं, वी हैव एक्वायर्ड नॉलेज फ्रॉम अवर मल्टीपल एक्सपर्ट्स। तो हमने उनकी नॉलेज को लिया और कहीं पे हमने इसको स्टोर कर दिया। ओके, और उस स्टोरेज का नाम हमने दिया knowledge base. Okay, so this is happening, knowledge base, knowledge from an expert. We took knowledge from expert and we stored it in knowledge base. Okay, so decision support system में जैसे आपका मॉडल बेस था, यहाँ पे हम मॉडल बेस नहीं कहते, यहाँ पे हम उसको कहते हैं इन्फेरेंस इंजन। यहाँ पे आपकी एल्गोरिथम, रूल्स, सब कुछ होते हैं, इफ देन रूल भी होता है। ओके, इफ देन रूल, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इफ एनालिसिस। ओके, तो इसमें हमारा एक का एक, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बाइनरी ट्री हो सकता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ऐसे रूल्स वगैरह यहाँ पे लगते हैं और एल्गोरिथम्स यहाँ पे होती है। मींस आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे एक्सपर्ट सिस्टम का जो माइंड है, ओके, वो इन्फेरेंस इंजन है। This is user interface. Now this is non-expert user. Now this expert will made his query, okay, through user interface. Now this query will go to inference engine, और इन्फेरेंस इंजन यहाँ पे आपकी जो क्वेरी है, आपका जो प्रॉब्लम है, उसको रीड करेगा, उसको समझेगा, और उसके बाद इट विल गो टू नॉलेज बेस। नॉलेज बेस में एक्सपर्ट्स की नॉलेज रखी हुई है, उस क्वेरी के बेसिस में पैटर्न्स को निकाल के, हिडन पैटर्न्स जो हैं, और उनमें से नॉलेज को निकाला जाएगा और उनको एक सीक्वेंस में, इन अ मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर में, जिस मैनर में आप चाहते हैं, वो डेटा फिर आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, तो जो आपने क्वेरी करी है, इन्फेरेंस इंजन विल टेक दैट क्वेरी, ओके, विल डू सम कैलकुलेशंस ओवर इट, विल अप्लाई सम एल्गोरिथम रूल्स ओवर इट, और उसके बाद नॉलेज बेस में जाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज वहां पड़ी हुई है आपकी क्वेरी से रिलेटेड, उसको उठाया जाएगा, और इन्फेरेंस इंजन फिर आपको किस पैटर्न में, किस सीक्वेंस में, किस मैनर में आपको वो उसका आंसर चाहिए, वो आंसर आपको यूजर इंटरफेस में देगा। ओके, और आप यहाँ से एडवाइस ले सकते हैं, तो आपको एडवाइस मिल जाएगी। आपको ये लगेगा ही नहीं कि यू आर डीलिंग विद सिस्टम, एनी यू नो नॉन ह्यूमन, अनह्यूमन सिस्टम। आपको लगेगा कि यू आर डायरेक्टली, यू आर टेकिंग कंसल्टेशन फ्रॉम फ्रॉम एन एक्सपर्ट, कि आपको लगेगा एक्सपर्ट ही बैठे हैं। तो दिस इज एक्सपर्ट सिस्टम। नाउ ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम जो हमारे पास हैं, इनको हम मल्टीपल लोकेशन पे दे सकते हैं, एंड इट विल वर्क 24/7। और अब यहाँ पे एक ही एक्सपर्ट नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल एक्सपर्ट हैं, हंड्रेड ऑफ एक्सपर्ट हैं, जिनकी नॉलेज हमने एक्सपर्ट सिस्टम में रखी है। गेटिंग द पॉइंट? सो टू हेल्प अवर डिसीजन मेकर्स, okay, to take the right decision, okay, to assist them, we provide expert system. So expert system, it is an example of artificial intelligence, okay, and general support system. It comes under the category or classification of general support system. Getting the point? So expert system, it is like your decision support system, but here we do not have knowledge or database. We have knowledge base of multiple experts. Getting the point? So these are the components: user interface, knowledge base, and inference engine. Okay, guys. So I hope you got this point, expert system. Okay. So note down your queries, and if you will be having any problem, any issues, any doubts, any points you want clarification, so we'll discuss in the live session. Okay. So till then, take care. Bye bye.